Hello, my dear students, I'm Malik Farooq. We are dealing with the cell for the class 11th, the unit of life. We are dealing with the membrane organization, and we have studied these lipid model, laminar model, Daniel and Robertson model. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉबर्टसन्स मॉडल. रॉबर्टसन आपके स्क्रीन पर ये एक पिक्चर है. Robertson unit membrane model of cell membrane. Robertson in 1959 studied cell membranes from different sources. यानी रॉबर्टसन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. रॉबर्टसन ने 1959 में सेल मेम्ब्रेन्स की जब तहकीकात की अंडर डिफरेंट सोर्सेज अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, he found that all types of cell membranes possess a similar trilemmal structure. तो उसने क्या देखा कि एक he found that all types of cells, जितनी भी सेल की किस्में हैं, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, किसी और की सेल हो, तो दे पॉजेस ए ट्राइलिमिनर, एक तिकोनी स्ट्रक्चर है. ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन रॉबर्टसन पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन. तो उसने वहाँ से एक कंसेप्ट दिया, दैट्स कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन. All biological membranes from prokaryotes to eukaryotes, plasma lemma to membranes around the cell organelles have a similar structure. He also said that he put forward a concept of unit membrane. उसने सबको एक यूनिट यानी एक ही मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मीन्स सिंगल. अगर चीज 3 या 4 ताहों से बना हो लेकिन हम इसको सिंगल मेम्ब्रेन कह सकते हैं. All biological membranes फ्राम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, यानी एक सेल से लेकर बड़ी सेल तक, प्लाज्मा लिमा टू मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा लिमा से लेकर मेम्ब्रेन्स तक, अराउंड द सेल ऑर्गेनेल्स हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर. इनका एक ही स्ट्रक्चर है. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर ट्राइलिमिनर और ट्राइपार्टाइट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद ए वाइडर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मिडल लेयर and a narrow electron dense layer on its either side. A unit membrane has a thickness of 75 angstroms. A unit membrane has a thickness of 75 angstroms. If a membrane is thicker than 75 angstroms, for example, nuclear envelope, it is made up of 2 or more unit membranes. Each of the 2 electron dense surface layer is 20 angstroms. यानी ये जो बीच वाली ये वाली, तो इसको हम ये मानते हैं कि इनर लेयर जो इसका है ये है 20 एंगस्ट्रॉन्स, और बाहर का जो आउटर प्रोटीन लेयर है वो है 20 एंगस्ट्रॉन्स. बीच वाले हैं फास्फोलाइपिड बाइलेयर, दैट्स 35 एंगस्ट्रॉन्स. ये है एक्सटेंडेड बीटा प्रोटीन, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल्स, हाइड्रोफिलिक हेड, एक्सटेंडेड प्रोटीन. ये रॉबर्टसन का मॉडल था. तो इट्स मेड अप ऑफ 2 or more unit membranes. Each of the 2 electron dense surface layer is 20 angstroms thick. It's formed of extended or beta protein molecules. The 2 surface layers are made of chemically different proteins. जो surface layer है इसकी, that's made up of different proteins like mucoprotein in outer surface layer and non-mucoid protein in the inner surface layer. The central electron present layer is 35 angstroms thick. It is actually a bilayer formed of phospholipid molecules with their polar hydrophilic heads electrostatically linked to the surface proteins and non-polar hydrophilic tails towards the center. Unit membrane concept has drawbacks. All biological membranes do not have a uniform thickness of 75 angstrom. यानी अगर हम कहेंगे कि जितने भी ट्राइलिमिनर मेम्ब्रेन हैं इनको हम यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं एज पर द रॉबर्टसन मॉडल, लेकिन सबकी जो ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन डू नॉट हैव ए यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 75. उनको सबको 75 एंगस्ट्रॉन्स की थिकनेस नहीं है. द थिकनेस वेरीज फ्रॉम 50 to 100 एंगस्ट्रॉन्स. द थिकनेस में वेरी इवन इन सेम ऑर्गेनील. फॉर एग्जाम्पल डाइकोटिसम और गोल्गी apparatus. There is a lot of variation in the quantity of lipid versus protein from 1.0
and 0.8 to 1.0 equal to 4. That is 1.0 is to 0.8 to 1.1 this equal to 4. So freeze etching technique has shown that various biological membranes possess different types and number of particular inclusions. So lamellar model proposed by the Daniel and Devoson and Robertson are unable to explain. अब इनके कुछ ड्रॉबैक्स है जो हमने पीछे पढ़ा lamellar models and Daniel and Devoson or Robertson model that have some they are unable to explain certain things. For example, semi-permeability of membrane to water. Semi-permeability of membrane to water. Number B, selective permeability to electrolytes and other metabolites. Number C, differential permeability of different biological membranes. Number D, renditivity or non-leakage of absorbed materials. And cell membranes are highly dynamic. Lipid protein ratio in the favor of lipid, while lamellar models are required their ratio to be 1:1. 1:1. So this was the Robertson model. Robertson in the nutshell, we can say that Robertson studied in 1959 cell membranes from the different sources under electron microscope, and he found that all cell membranes possess a similar trilamellar structure. On the basis of his observation, Robertson put forth the concept of unit membrane. All the biological membranes from prokaryotes to eukaryotes, plasma, lemma to membrane around the cell organs have a similar structure. And biological membranes are trilamellar or tripartite in constitution with a wider electron transport middle layer narrow and narrow electron dense layer on its either side. A unit membrane has thickness of 75 angstroms, and if a membrane is thicker than 75, for example, nuclear, it's made up of 2 or more unit membranes. That was all about the Robertson model. In the next lecture, we will deal with the fluid mosaic model. It is currently most acceptable model of cell membranes, which was proposed by the Singer and Nicholas in 1972. The most accepted model of cell membranes. उसके बाद हम आएंगे cell organelles पर. जितने भी cell organelles, for example, nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, ribosomes, these mitochondria, etc. We will deal with each of them one by one. Thank you for watching the class.